मैम वी कांट हियर यू, आपका ना म्यूट आ रहा है। अब ठीक है बेटा? जी हाँ जी, अब आ रही है आवाज। अब तस्वीर भी आ रही है? हाँ जी। So how do we manage it? We manage the xerostomia by frequent sips of water, alcohol-free mouth gels, sugar-free chewing gum, daily use of fluoridated dentifrices. अब daily use of fluoridated dentifrices हम क्यों लेंगे? Because we want to prevent any further caries activity. तो हम वहाँ पे daily use कर सकते हैं ताकि इसकी application हो जाए. Varnishes and then fluoride gels, sodium fluoride, stannous fluoride, drugs like civimeline and pilocarpine, which are salivary stimulants, and regular follow-up. So, if we talk about the reservoir dentures, what do we mean by the reservoir dentures? Reservoir dentures are basically constructed in a way that we try to create a sort of pocket within the denture parietal area, and in that pocket you can put in the artificial saliva. Well, that's a difficult thing to do. It's a difficult thing to maintain, but it is an option which was tried and tested by few practitioners. So it should be there, and you should be familiar with it. What we normally do is that we make a complete denture trial or a partial denture trial, the way you normally do it, and then we try to thicken the parietal area and try to make 2 layers over there, and then attach them with different mechanical means. Because of that, what happens is that we have a small little pocket from which saliva can ooze out on a daily basis. But then it is very, very important for the patient to be very cooperative, because since you're creating a pocket in a moist area, it can also act as a nidus for infection. And because there's moisture and there is not, the environment is not very aerobic. So because of that, the different types of microorganisms can grow over there. So you have to be very selective in selecting the appropriate patient which is suitable for this kind of denture. So this is the reservoir denture. This is the reservoir complete denture, in which what they have done is they have taken they made the trial, and at the trial stage they have taken hold of this the wax, this sprue wax. It is a kind of wax that we normally utilize in crown and bridge or casting techniques. And with the help of that wax, they created this small little room, and this small little room is then meant to store the artificial saliva, and from here the artificial saliva is going to constantly ooze out into the patient's oral cavity. Well, this looks doable, but still, again, you can see that the parietal shape of this denture is very different from what we normally do or what we normally prescribe to the patient. So we need to understand that it will be difficult for the patient to adopt to this kind of shape. So you are going to show it to the patient before prescribing him or suggesting him anything like this. If they are very keen to have it, then you can try it for once. So this is just a summary of what we have learned, or what we should be doing if we come across a patient with xerostomia. I'm sorry, the text written over here is very small. What I can do for you is to later on you can get hold of this in the form of printout from my office, or I can send it to you on the dialog box on LMS, so that you should be able to read it. It's just a complete summary of what we have learned so far, that what are we supposed to do when we encounter xerostomia and we have oral manifestations of xerostomia in the form of carious lesions or dry mouth, difficulty in swallowing or speech, and oral candidiasis and bacterial infections. So we've already gone through this. Then we come across another condition, which is oral submucous fibrosis. आप लोगों ने पढ़ा है oral submucous fibrosis. What is the condition? It's a precancerous condition in which there is some change in the soft tissues of the buccal musculature, and you know the reasons why it is there. You can identify the strong bands of the tissues
which are there because of the change in the musculature. So if you come across oral submucous fibrosis, again, it is very, very important that you do not traumatize the tissues at all, because if there will be trauma, there will be further scar tissue formation, and that can further jeopardize the future functioning of the oral cavity, as well as it will be difficult for the patient to get himself adapted to the dentures. So during denture construction, again, I will emphasize upon the atraumatic denture technique. So what are the problems that are there? The mouth opening is also reduced because of the contraction of the musculature. The musculature is unyielding, and the sulci, they also become shallow. You know, the sulci are there to give us some retention form, and also they also provide us some stability in order to retain the dentures and make it less movable during function. So what we can do is, in addition to the traumatic denture technique, what you are going to do is to give them the supplements, vitamin and protein supplements, the microwave diathermy, and local injections of oral cortisone. Well, this is beyond your domain. You can easily advise them to refer to an oral maxillofacial surgeon for them to handle this condition appropriately. Surgical excisions, skin graft, and lateral tongue flap, that is normally done if it is moving towards the precancerous, further precancerous condition. So this is the all you need to do being a prosthodontist. What you need to do is to emphasize more upon the atraumatic denture technique. Then when there is reduced mouth opening, the option that you have with the dentures is sectional dentures. Sectional dentures से मेरी क्या मुराद है? What do we, as you can observe in this picture, the sectional dentures, the denture is inserted in two parts. First, it is made in one part, then it is sectioned very carefully into two parts, right? And then these two parts are joined together with the help of a snap-on button so that it is remained in the intraoral cavity. So this is how it is made or retained. You attach one flip on one side with acrylic, and then that flips onto the other side, and in the form of a button, it is able to retain the two parts together. So this is the wax up. The picture down there is the wax up that is normally done. And after the wax up, you are going to section them, and so that, and you will keep on referring to the model so that even after sectioning, it is well adapted to the oral surface. And then it is inserted into the intraoral cavity. So if you plan to make a sectional denture in the form, and you're also giving them a cast framework, the metal framework, this is how you make them. You make them individually because you will not be able to section them afterwards. You're going to do the wax up individually on one side and then on the other side. And then after these wax ups are done and they are casted in metal, you can easily see the small little points where they are snapped onto each other. This is how they are held together in the intraoral cavity. So this is, what is the advantage of the sectional denture? कि आप इसको individually insert कर सकते हैं in case of the reduced mouth opening. Then we also have hinged sectional dentures. Do you know the hinges of a door? आप लोगों को पता है hinges of a door क्या होती हैं? Are you? Yes. So like the hinges of the doors, similarly, likewise, small hinges, you can place them where you have done the sectioning of the denture. So what do we achieve by these hinges? So instead of opening the whole of the denture in the intraoral cavity like a plate, you will try to squeeze it with the help of this hinge and then insert it, and then it can fit back. This seems very easily, it looks more easier when I am saying it out, but when it is actually done, it is not that simpler, because we need to understand that the acrylic is very brittle. So there is a possibility then when the patient is pressing the denture, he presses it very hardly, and because of that, the denture can fracture too. So we need to understand the limitations of these prostheses, and then we need to also, when you are prescribing it, you need to also tell this thing to the patient as well, that these are the problems that you are anticipating.
Then we move on to the next condition, which is burning mouth syndrome. अच्छा जी, burning mouth syndrome में क्या होता है? The patient feels burning sensation anywhere into the oral cavity, right? But we need to understand that when do we classify a condition as burning mouth syndrome, primary burning mouth syndrome. Primary का मतलब ये है कि when the patient comes to you with the report, with this complaint of burning sensation in the oral cavity, first you need to examine them clinically. कि कोई अल्सरेशन तो नहीं है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई लैकिन पेनिस टाइप लीजन तो नहीं है. Once you are pretty sure that there is no physical involvement of the oral tissues, then you can easily say that the patient is suffering from the burning mouth syndrome. Normally, the patients who are affected by the burning mouth syndrome are the premenopausal or the postmenopausal women. And it is said that it is linked to the estrogen secretions. Reduced estrogen, because of the reduced estrogen secretions, the burning mouth syndrome presents itself into the internal cavity. But then again, you need to be absolutely clear that there are no other problems. And other problems can be in the form of hormonal, diagnosed hormonal conditions, allergies because of some restoration, because of some prosthesis, and because of some food, there might be some allergy. And as a consequence of that allergic reaction, the patient might be suffering from the burning mouth reaction. There would be xerostomia because of some other cause, and that can lead to burning mouth syndrome. The patient might be having some medications, there might be some nutritional deficiency in terms of vitamin B12 or vitamin C deficiency, there might be some candidal infections who might be causing that condition. So that is if it is the burning mouth or burning, this symptom is happening or it is reported as a consequence of these conditions that I've just told you, then it will be called as secondary burning syndrome. But if none of these conditions are present there, then we call it the burning mouth syndrome, which is primary, right? So if it is, you need to understand the difference between the burning mouth, the primary and the secondary burning mouth syndrome. Then what is the treatment? You see, it is simpler that if you have diagnosed it as a consequence of any other condition, you need to treat that condition, and that condition will be treated and the burning would go away as well. So that is how we manage the secondary burning mouth condition. However, the primary burning mouth condition or the syndrome is treated, then we have to treat it symptomatically. You can ask the patient to sip on a cold beverage or suck on ice chips or chew sugarless gums so that the salivation is improved and the sensation, the environment is a little, the temperature is a little cooled down and there is less sensation of burning into the intraoral cavity. We need to ask them to take nutritional supplements and avoid all the substances which can cause some irritation into the intraoral cavity. For example, tobacco, spicy foods, alcoholic beverages, mouthwashes that contain alcohol, and products which are high in acids, such as citrus fruits and juices. So this is the burning mouth syndrome. Then we move on to any confusion beta so far. आप लोगों में से कोई बताए, because since I am not able to see your faces right now, so I cannot be sure that are you able to understand or you're not able to understand. कोई चीज जो आपके जहन में आ रही हो? मैम प्राइमरी और सेकेंडरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम को रिपीट करते हैं. रिपीट कर दो. देखो बेटा, प्राइमरी का मतलब है कि वो खुद ही होगा, ठीक है, किसी डिजीज का कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, राइट? और सेकेंडरी का मतलब ये है कि कोई डिजीज है जो कि आपको नजर आ रही है फिजिकली या उसकी हिस्ट्री से आपको पता चल रही है. जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोनल प्रॉब्लम डायग्नोज है, किसी चीज की एलर्जी है, ठीक है ना. इसी तरह नंबर ऑफ कंडीशंस हैं जिसमें से आपको एक्चुअली पता चल रहा है. पिछली स्लाइड देख लेते हैं कि जिसमें आपको पता चल रहा है कि जी बर्निंग माउथ सिंड्रोम किस वजह से हो रहा है. ठीक. अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे पास जो प्राइमरी है, अगर पहले आप इसका ना डायग्नोसिस थोड़ा सा रिवर्स में जाके होगा. व्हाई? बिकॉज वी नीड टू रूल आउट दिस कंडीशंस फर्स्ट एंड देन वी आर एबल टू से इट फॉर श्योर कि प्राइमरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम है. यू नीड टू रूल आउट कि ड्राई माउथ, मेडिकेशंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कैनेडियल इन्फेक्शंस, इसमें से कोई कंडीशन तो नहीं है. अदरवाइज फिर ये प्राइमरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम. ठीक है. यस मैम, थैंक यू. और इसके अलावा कोई और सवाल किसी के जहन में आ रहा हो जो अभी तक हमने पढ़ा है? सेक्शनल डेंचर किसी
किसी ने पूछा ही नहीं ना रेजर्वायर डेंचर्स के बारे में, किसी ने पूछा ना सेक्शनल डेंचर्स के बारे में पूछा। मैम रेजर्वायर कंप्लीट डेंचर्स का प्लीज एक दफा रिपीट करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ ये देखो, इस पिक्चर को गौर से देखो, अब नजर आ रही है ना आपको पिक्चर? यस मैम। इसमें से ये देखें आप, जरा मेरे साथ साथ चलें कि यहाँ पे देखो ये डिफरेंट ट्रायल, कंप्लीट डेंचर का ट्रायल कर लिया, ठीक है, जिस तरह हम नॉर्मली कंप्लीट डेंचर का ट्रायल करते हैं। अभी आप लोगों ने तो खैर यू हैव नॉट लर्न द, सिर्फ आप लोगों ने एक्सरसाइज ही की है सेकेंड ईयर में, मेजॉरिटी क्लास ने, तो अभी तक आपने डेंचर्स तो नहीं बनाए, बट ट्रायल को समझते हो कि जब सेटअप करके हम पेशेंट के मुंह में ट्रायल करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज कि हमने ट्राइन करने के बाद जो पेरिटल साइड है उसके ऊपर एक हमने मटेरियल लगा दिया जिसको हम नॉर्मली कहते हैं टिश्यू कंडीशनर। समझो एक सॉफ्टर मटेरियल होता है जिससे हमें उस सरफेस का इम्प्रेशन सा मिल जाता है, जो आपको व्हाइट सा मटेरियल नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया एंड वी हैव आस्क्ड द पेशेंट टू परफॉर्म टंग मूवमेंट, टंग से स्वेलो किया, टंग इसके कांटेक्ट में आएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल रही है। सो इस स्पेस को हम यूटिलाइज करेंगे कि यहाँ पे हम थोड़ी सी वैक्स लेके, थोड़ी डिफरेंट वैक्स होती है जिसको हम स्क्रू वैक्स कहते हैं, उस वैक्स की मदद से यहाँ पे हम एक वैक्स के अंदर ये एक पॉकेट सी बनाएंगे। पॉकेट से मेरी मुराद ये है कि उसको थिक कर देंगे, थिक, थोड़ी सी थिकन सरफेस है, नीचे देखो मैंने वैक्स लगाई, उसको थोड़ा सा एलिवेट किया और उसके ऊपर एक और सरफेस के ऊपर दोबारा से वैक्स लगा दी। उसका एडवांटेज ये है कि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन मिल गया। ये डिप्रेशन उस रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करेगा जिसके अंदर पेशेंट को हम ये देंगे और ये ऊपर से ये लिड लगेगा पेशेंट के ऊपर ना। पेशेंट क्या करेगा, लिड उतारेगा, स्लाइवा अंदर डालेगा, वापस उसको चिपका देगा, ठीक है। और दरमियान में से स्लाइवा ग्रेजुअली ऊज आउट होता जाएगा, छोटा सा होल होगा, उसमें से स्लाइवा निकलता जाएगा। तो लुब्रिकेशन कॉन्स्टेंटली, समझे पेलेट के अंदर एक छोटी सी पॉकेट है जिसके अंदर से लुब्रिकेशन होती जा रही है। थैंक यू मैम। और एनीवन एल्स? सेक्शनल डेंचर समझ आ गए थे? यस मैम। अच्छा चलो, अल्लाह करे आपको आ गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम गैग रिफ्लेक्स मैनेजमेंट। गैग रिफ्लेक्स मैनेजमेंट क्या चीज है जी? गैग रिफ्लेक्स में व्हेन देयर इज अ रिस्पांस ऑफ द फ्रिंजियल मस्कुलेचर, जिसकी वजह से द पेशेंट परफॉर्म्स अ काइंड ऑफ मोमेंटिंग मूवमेंट। और ये होती क्यों है गैग रिफ्लेक्स? व्हाई दिस गैग रिफ्लेक्स हैपेंस? It happens because there is stimulation of the glossopharyngeal and vagus nerve. जो 9th and 10th nerve है उनकी stimulation होती है, जिसकी वजह से जो efferent fibers होते हैं, they take the what do we call it, the sensation back to the medulla through jugular foramen, and then because of that the sudden response comes back to the pharyngeal musculature and the patient tries to throw out, right? And this is gag reflex management. Again, the physical stimulation of the area where these nerves are supplying उसकी वजह से भी होती है, and psychologically stimulation की वजह से भी होती है। दोनों चीजों की वजह से आपको gag reflex आ सकता है। And if we try to classify, मैं आपको दिखाती हूँ, if we try to classify the gag reflex, it is classified like this। और इसमें inborn psychic भी होती है because of the patient is in a habit of having an exaggerated gag reflex, psychologically होती है, it can be acquired or it can be because of the mechanical stimulation. Again, if it's a mechanical stimulation smell से भी gag reflex हो सकते हैं, hearing से भी हो सकती है और visual stimuli से भी होती है, right? And acquired किस तरह से है? Acquired जो है वो alcoholic और digestive problems से, alcoholism and digestive problems की वजह से acquired हो सकती है। So you need to understand कि जो gagging हो रही है मरीज को, वो किस वजह से हो रही है when he is sitting on a dental unit। अब देखो, जब मैंने बात की olfactory की वजह से, some patients they might have a bad experience, and because of that bad experience might be related to, or it can be linked to some sort of smell. It can be even very pleasant smell to some other person, but if the patient is having some psychological trauma in the presence of that smell, so he can link the two things together and the brain can get confused and immediately the patient can come up with a gag reflex, right? So अब आपने reason समझनी है
कि पेशेंट को क्यों हो रही है। फिजिकली तो आप टच करोगे तो होगी ना, बट अगर स्टिमुलेशन हो रही है तो किस वजह से हो रही है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जहन में रखिएगा। Then again, it's just a pathway of letting you know that how does it happen. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि because of the nerve ending receptors, they detect some intrusion and the sensory signals carries there and it goes there. And because of this brainstem with the medulla, this sends instructions to the from the motor neurons, and because of this, the throat muscles they become active, and then they constrict. Right? So this is the mechanism that is involved. Abhi dekho, some people they might not be comfortable with the dental work. So handpiece की आवाज से भी उनको gag reflex हो सकता है, alginate की smell से भी हो सकता है. So we need to know that what is the reason that how the gag reflex is happening. And there are different categories of its severity. It can start from very mild to moderate to severe. लेकिन ये तो आपको पता तो जब चलेगा ना when the patient is sitting on a dental chair. So you need to know कि उसको किस वजह से हो रही है. जिन लोगों ने अभी प्रोसेस में काम शुरू किया है, I have repeatedly emphasized कि how to load the tray. क्योंकि अगर आप ट्रे लोड एक्सेसिव करते हैं और the alginate that you have mixed is very flowy, it can drip back into the throat of the patient, and because of that the gag reflex might be initiated. फिर patient की position किस तरह रखनी है. Patient should be in upright position. आपने recline नहीं करना. Recline करेंगे तो there are greater chances of the material to go back into the throat. तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने पेशेंट को कैसे मैनेज करना है. पहले प्रिवेंशन करनी है और बाद में अगर हो जाती है तो क्या करना है. प्रिवेंशन के तरीके मैंने आपको बता दिए कि ट्रे की सिलेक्शन बड़ी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. बहुत बड़ी ट्रे होगी, वो पेरिटल टिश्यूज पे सेंसिटिव एरिया पे टच करेगी. वो टच करेगी तो गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाएगी. ठीक है. फिर आपने जब मटेरियल मिक्स करना है, मटेरियल की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी वेरी फ्लोएबल, इट शुड बी ऑफ थिकर विस्कोसिटी. तीसरी बात ये है कि जब आपने ट्रे लोड करनी है तो ट्रे लोड करते हुए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट यू आर नॉट लोडिंग इट टू द फुल, और स्पेशली द पोस्टीरियर पार्ट, द मिडिल वाला पोर्शन जो पैलेट का है, इट शुड बी लेफ्ट एम्प्टी. एंटीरियर पोर्शन को ज्यादा लोड करें so that there are lesser chances of material going back into the throat. Then the fourth thing is that the patient should be upright, not in a reclining position. तो ये चार चीजें तो आप जहन में कर लें तो there are lesser chances of patient going into a gag reflex. पांचवी चीज ये है कि when you have inserted, you have to insert it very carefully and ask the patient to breathe through nose. ठीक है जी. ये पांच चीजें आपने ध्यान में रखनी है. Tray selection, material manipulation or material consistency, tray loading, and then position of the patient and how do you insert the tray and ask him to breathe through nose. Then you will be able to control it. So again the etiology जैसे मैंने भी आपको एक तो फ्लो चार्ट में भी दिखाई है, इसी तरह जो लोकल एंड सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स में मल्टीपल etiology है इसकी कि how does it happens. It happens nasal obstruction में, post nasal drip, sinusitis, nasal polyps, mucosal congestion, dry mouth, medications, chronic GI disease, hiatus hernia and controlled diabetes. And again the etiology ये तो थे local and systemic factors में, और जो anatomic factors हैं उसकी etiology जो है वो sensitivity area है, distribution of the afferent neural pathway, particularly the vagus nerve being more extensive. Psychological factors जो हैं वो ये सारे psychological factors हैं जो अभी मैंने आपको बताया. Orofacial conditions that may have a strong psychogenic component are temporal mandibular pain dysfunction syndrome, atypical facial pain, burning mouth syndrome. And iatrogenic factors जो कि आप लोग cause कर सकते हो, जो कि most likely affect करते हैं gag reflex को, जो मैंने अभी बताए हैं. Overloaded impression tray, overextended borders हैं, posterior aspect of the maxillary denture or the lingual aspect of the mandibular prosthesis, poorly retained prosthesis and increased vertical dimension of occlusion. ठीक है. ये दोनों, इन दोनों का screenshot ले लिया आपने, दोनों slides जो थी. मैम आप पिछली वाली दिखा सकती हैं एक दफा, ये वाली का ले लिए. पिछली मैंने कहा नहीं था तो लेना ही नहीं था. अच्छा जी, चले इसका ले लें पहले. ठीक है. असल में ना मैं क्यों why am I emphasizing upon this कि आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, because it is not mentioned in this way in your books. तो इस तरह से ना आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि you will be able to remember this.
ठीक है? Done. Thank you. अच्छा, आगे इसका भी ले लिया आपने? Yes, ma'am. ले लिया. अच्छा जी, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कैसे करनी है कि वी हैव टू पॉजिटिवली रीइंफोर्स कि व्हाट आर द फियर्स इनिशियली, जो पेशेंट को आप थोड़ा सा टाइम दें, उससे डिस्कस करें, पूछ लें एक दफा सवाल, इतना सा सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि आर यू हैविंग एनी फियर फॉर द डेंटल ट्रीटमेंट, कुछ नहीं होगा, थोड़ी तसल्ली करें, थोड़ा रीइंफोर्समेंट करें, रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स जो हैं वो इमेजरी से, देयर आर मल्टीपल थियरीज क्या आप उस तरह से पेशेंट को रिलैक्स कर सकते हैं। हम ज्यादा एम्फसाइज आपको मैनुअल मैनूवर्स पे करते हैं, जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं उसका ध्यान करना है आपने। उनके अलावा व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू व्हेन यू हैव इंसर्टेड द ट्रे, यू विल डिस्ट्रैक्ट द पेशेंट, दिस इज द बेस्ट टेक्निक दैट वर्क्स in the patient when you are having the material and the tray to the patient's oral cavity. आप ये देखो, इसमें भी the way this doctor has supported the patient is very nice, because थोड़ा सा पीछे से अपने आर्म से, हेड से, अपने आर्म से या अपने हैंड से आपने उसको सपोर्ट दे रही है, सो दैट द पेशेंट डज नॉट रिक्लाइन, and ask the patient to breathe through nose, right? This is one thing. Then distraction क्या करानी है? अब distraction में कुछ भी which works for you, जैसे what I normally do is I ask the patient to start moving their limbs, लेकिन एक सीक्वेंस में मूव नहीं करना। बेसिकली ये आपका ऑपरेटर का मेंटल कंट्रोल है कि वो सिचुएशन को कितना केयरफुली हैंडल करता है। अगर आपको जो ही लगे कि पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स आया, आस्क देम टू मूव देयर आर्म्स, पहले एक आर्म उठाए राइट वाला, लेफ्ट वाला, अपनी लेग्स को इंडिविजुअली मूव करें, लेग्स को बेंड करें, आर्म्स को फोल्ड करें। तो पेशेंट का इमीडिएटली माइंड जो है वो उस एक्टिविटी में चला जाता है, एंड द पेशेंट हिज माइंड गेट्स अवे फ्रॉम द गैग रिफ्लेक्स और the thing that is in his mouth. तो आपने उस तरह से उसको मैनेज करना है। इसके अलावा एडिशनल टेक्निक ये है कि आप एनेस्थेटिक्स लगा सकते हैं। इट इज मेंशन्ड इन द लिटरेचर, बट आई एम नॉट वेरी श्योर दैट इट वर्क्स इफेक्टिवली और नो, कि पेरिटल साइड पे आप एनेस्थेटिक लगा दें, कोई प्री मेडिकेशन करनी है, बिकॉज ये थोड़ी सी लिटरेचर में इस पे डिबेट भी हुई। प्री मेडिकेशन कर सकते हैं आप पेशेंट को बिफोर द अपॉइंटमेंट diazepam दे दें, provided he is not having any contraindication for the use of diazepam, antihistamines दें, antiemetics दें, antinauseants दें। Pressing and hiding caves, उसको press करें, just like acupuncture, it works and it helps in relaxation of the patient. Distraction मैंने आपको बता दिया, inhaling through nose and activities, muscle fatigues, limbs move करने से distraction हो जाएगी। काउंट कराएं, वैसे काउंटिंग में वो दिल में ही काउंट कर सकता है, मुंह में तो आपने ट्रे रखी हुई है, ठीक है ना। एंड इफ somebody gets relaxed with the music, तो उसकी मर्जी का म्यूजिक उसको लगा दिया जाए। Then you are going to train the patient slightly that they are supposed to put the tongue a little downwards. Don't try to thrust out the tongue, because जब tongue thrust out करेगी तो पीछे से pharyngeal musculature और आगे आएगा और gag reflex ज्यादा होगी। तो पेशेंट को आपने ये बताना है, अगर वो उसके अंदर ये टेंडेंसी हो कि अपनी जुबान को मुंह के अंदर ही नीचे की तरफ रखें, ठीक है, and prevent it from lifting. Then this is another strategy in which you can easily give them training dentures, और ये उस सूरत में होगा कि you have diagnosed the patient in the initial appointments and patient is absolutely reluctant to use any kind of prosthesis. तो आप ये कह सकते हैं मरीज को कि अच्छा मैं आपको ना एक छोटी सी प्लेट बना के दूंगा या दूंगी कि जिसके अंदर दांत लगे नहीं होंगे। आप उस प्लेट को, और देखें उसका पैरेटल पोर्शन नहीं है इस प्लेट का ना, ट्रेनिंग डेंचर का, only it's a U-shaped small little plate. पहले वो इसको ये लगाएंगे, फिर पेशेंट इससे ट्रेन होगा, फिर ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द पेरिटल साइट ऑफ दिस डेंचर and you can gradually add on teeth as well, so that eventually the patient is able to use this kind of denture. ठीक है, समझ आ गई कि आपने पहले साइज छोटा लगाया मुंह में, दांत भी नहीं दिए और पेरिटल साइड भी मिसिंग थी, फिर gradually we added on to the parietal surface and also we have start placing the teeth individually. ठीक है, तो इस तरह पेशेंट विल बी एबल टू अडॉप्ट टू दिस काइंड ऑफ प्रोस्थेसिस slowly and gradually. It is also mentioned in the literature कि आप पेशेंट की टंग के ऊपर you put some salt there, it might be effective in reducing the gag reflex as well. And then as I mentioned that amongst different distraction and relaxing technique, acupuncture has its role too, and they say that normally there's an anti-gagging point on the external auditory meatus, this small little point. And in that point, if you insert, don't try to do it yourself,
there has to be an acupuncture expert for doing this activity, that they insert a small little meter with the 7 millimeter of depth into this area, the anti-gagging point. This is supposed to be, well, I have never tried it, but this is supposed to work good for a patient with an exaggerated gag reflex. So with this we come to the formative assessment. अगर आप मुझे LMS पे ही इसका जवाब कहीं से ढूंढ के दे दो, या अगर लेक्चर में से आया आपको मिलता है तो जस्ट मेंशन इट इन द डायलॉग बॉक्स, तो मेरे पास आप सबका रिकॉर्ड खुद ब खुद पहुंच जाएगा कि व्हाट आर द वेरियस वेज टू इम्प्रूव द प्रोसोडोंटिक आउटकम इन अ डायबिटिक पेशेंट एंड व्हाट आर द वेज टू मैनेज माइल्ड गैग रिफ्लेक्स इन अ डेंटल क्लिनिक. ठीक है, छोटा सा जवाब आप 2-3 लाइनों का या 4-5 लाइनों का, जितना भी आप लिखना चाहते हो, ठीक, या आप मुझे उसके ऊपर डायलॉग बॉक्स के ऊपर करके दे दो, तो जो देगा उसकी एंट्री हो जाएगी वहां पे. ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसके बारे में अभी तक जो मैंने आपसे पूछा है? बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? No, madam. नो मैम. इसका काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है. मैंने ईयर गलत लिखा हुआ है इसमें, बाय द वे 2021 शुरू हो गया. ले लिया? जी. चलो जी, दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर. कोई चलें, ठीक है, आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर राइट नाउ. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.